Good morning, students. Today we'll discuss some basic accounting terms. Okay. So in our account we use some terms. Actually, you should know the meaning of that terms. So we'll discuss some terms in this chapter. That is, first is a business transaction. Okay. A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. So means any activity, any economic activity that can be measured in the terms of money, and that can change the financial position of the business, that is called a business transaction. You just have to write the meaning only. Okay. So what is a business transaction? A business transaction is an economic activity that the business that changes its financial position. Whenever any business transaction takes place, it results in a change in the values of some of the assets, liabilities, or capital. Okay, whenever any transaction takes place, it changes the values of assets, liabilities, or capital. Okay, so you just have to give the meaning only. Next is event. An event is the consequence or result of a transaction. Okay, means as soon as a transaction takes place, a results comes out. Okay, you can take an example like suppose Sachin starts a business with a capital of rupees 5 lakh. He purchases goods for rupees 4 lakh for cash and sales 3/4 of these goods for rupees 3 lakh 80,000. He also pays 20,000 as rent of the go down. Okay, so these are the transactions. Okay, investment of rupees 5 lakh in business, purchasing of goods 4 lakh, making cash sales 380, and payment of go down rent is 20,000. So these are the transaction. Every transaction change the financial position of the business, as we have learnt in the definition. And if you talk about the event, the profit of 60,000 computed as under कि 60,000 का प्रॉफिट हो गया इन सब ट्रांजेक्शन्स की वजह से, तो 60,000 का प्रॉफिट हुआ. आप कैसे देखिए, सेल्स 380 की हो गई. ओके, एंड उसकी कॉस्ट 380 की जो कॉस्ट है वो 3 लाख है एंड 20,000 उसका एक्सपेंडिचर है. ओके, तो द टोटल कॉस्ट इज 3,20,000. वी आर सेलिंग द गुड्स of rupees 380 and the cost of that goods is 320, so the profit is 60,000. तो ये देखिए बच्चों, an event is the consequence or result. तो what is the result of this transaction? The result of this transaction is the profit of rupees 60,000. So you can say that event is the consequence or result of a transaction. Okay, next is account. In actual practice, the individual transactions of like nature are recorded, added and subtracted at one place. Such place is customarily termed as an account. हम सारी ट्रांजेक्शन जो सिमिलर नेचर की हैं, सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में सपोज हम सेल्स रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्ड इन दैट अकाउंट. हमने if we have sold goods to A, if we have sold goods to B, so if we have sold goods to C, and they have returned the goods, तो sales, return and sales, all these transactions are recorded at one place. परचेज की ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में जाएंगी, सैलरी की ट्रांजेक्शन सैलरी अकाउंट में जाएंगी, रेंट की ट्रांजेक्शन रेंट अकाउंट में जाएंगे. द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस एंड कस्टमरली दिस प्लेस इज कॉल्ड एन अकाउंट. ओके, prior to understand the meaning of debit and credit, it is essential to understand the meaning and form of an account. देखिए, डेबिट और क्रेडिट तो आप अभी आके समझेंगे, बट यू शुड नो अबाउट द अकाउंट. तो हमने आपको बताया कि अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, an account is a record of all business transaction relating to a particular person or item. In accounting, we keep a separate record of each individual assets, liability, expense और income. मैंने आपको बताया हर तरह का, whether it is an assets or a liability or
income or expense. So for every thing, it is necessary to segregate all the transaction, and it should be recorded one place. Means similar transactions are recorded one place. Okay, so that place it call account. देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैश अकाउंट. इट मीन्स ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन दैट अकाउंट. आपने सपोज मेरे पास स्टार्टिंग बैलेंस टू बैलेंस BD brought down. Suppose I have rupees 1 lakh opening balance. Okay, and I have sold goods in cash. So I will write here to sales account. Suppose 50,000 की मैंने सेल की है. ओके, यहाँ मैंने कुछ एक्सपेंस किया. सपोज सैलरी पेमेंट की, बाय सैलरी सपोज 20,000 की. ओके, और मैंने सपोज एक एक्सपेंडिचर और कर दिया. मैंने स्टेशनरी परचेज कर ली. ठीक है, सपोज मैंने 30,000 की स्टेशनरी या 40,000 की स्टेशनरी परचेज कर ली. ठीक, तो अब आई हैव अ टोटल कैश ऑफ रुपीज़ 1,50,000 एंड आई हैव स्पेंट रुपीज़ 60,000. तो जो 90,000 बचे बीच में, ये मेरा बैलेंस हो गया बाय बैलेंस CD. ओके, तो दिस इज़ द कैश अकाउंट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ द कैपिटल. It refers to the amount invested by proprietor in the business enterprise. Amount may be in the form of cash, goods or assets. तो ऐसा नहीं है कि ओनली द कैश इज कंसिडर्ड एज कैपिटल. बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि हमने वी हैव स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ रुपीज़ 5 लाख, तो 5 लाख ही कैपिटल है. बट द ट्रांजेक्शन इज वी हैव स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंड ऑल्सो सपोज विद सपोज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख, तो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी 6 लाख. ओके, 5 lakh is cash and 1 lakh is furniture. ठीक, तो whether it is in the form of cash or whether it is in the form of goods or whether it is in the form of assets, all these are called capital. For the firm, it is the liability towards the proprietor. Obviously, a proprietor actually you should make it very clear that business and businessman, these are the two different things. When a proprietor invests his capital in the business, so this capital becomes a liability for the business, and this is called the internal liability because this has to be paid to the proprietor. Okay, so you can simple see the formula like capital is equal to assets minus liabilities. जितनी assets हैं, if you deduct the liabilities from these assets, this is called capital. Next is drawing. ड्राइंग क्या है बच्चों? कभी कभी पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर अपना कुछ गुड्स या कैश विड्रॉ कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स. ओके, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी. इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द टर्म ओज टू आउटसाइडर्स एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू द प्रोप्राइटर्स. In the words of Finney and Miller, liabilities are debts. They are amounts owed to the creditors. This can be expressed as liabilities equal to assets minus capital. You can say actually liabilities can be classified into two types, that is internal liability and external liability. And here we mean about the liability is the external liability. That's why the formula is given here, liability is equal to assets minus capital. So assets means all the assets including cash. If we deduct outside internal capital, that is the capital of the proprietor, है ना, means in the capital, the value of the capital from assets, तो remaining amount will be called liabilities. ठीक है, अगर आप देखें तो लाइबिलिटी, इफ़ यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो ये जो लाइबिलिटीज साइड है, तो ये लाइबिलिटीज साइड ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी है बच्चों, है ना. इस लाइबिलिटी को हम इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या कहते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इन शॉर्ट लाइबिलिटी क्या है? द वैल्यू दैट हैज़ टू बी पेड टू द आउटसाइडर्स. देखिए, इंटरनल लाइबिलिटी है एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी है. ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे to the proprietor or owners are internal liabilities such as capital and accumulated profits. And the external liabilities, all amounts
which a business entity has to pay to outsiders are known as external liabilities, such as creditors, bank overdrafts, bills payable, outstanding expenses, loans, etc. Okay. If you classify the liability on another type, the liability may be further classified into two parts as under long term or non-current liabilities. All the liability that has to be paid within a period for more than 1 year, that is called the long term liabilities, है ना. And the current liabilities, the liabilities that has to be paid within a period of 1 year, that is called current liabilities. तो बच्चों यहाँ तक हम करेंगे. नेक्स्ट टर्म्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे. अभी इसमें कुछ टर्म्स और हैं. ओके, अभी आप यहाँ तक की टर्म को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. थैंक यू.